अब चलते हैं रोहतांग पास। हम लोग रात को 2 बजे निकले जस्ट टू बीट द ट्रैफिक एंड कैब किया है इंस्टेड ऑफ टेकिंग आवर ओन कार प्योरली बिकॉज ऑफ द टेरेन और देन आई विल आल्सो बी एबल टू कैप्चर मोर अराउंड. This is an amazing view with a lot of cars around. काफी लंबा जाम है to Rohtang Pass, and it's going to take another half an hour to 45 minutes for this to clear. But the weather is amazing, so we don't no complaints if you have to wait here for a while. यहाँ पे आपको गाड़ी की जो परमिशन होती है वो दिखानी होती है. If you have a private car, you have to buy close to about 550 rupees for a permission, or the cabs. मैं ये कर रही हूँ. So one thing that I did not mention in the first two parts is that we were all planned to go to Kashmir. All our bookings were done, but just a day before we had to cancel the trip because of the recent events in Kashmir. And then we had to detour to Jibhi and Tirthun Valley. Hence, we did not have our bookings done, and kids were super excited for the trip, so we did not want to cancel it. But this sort of came out to be a very good trip. And see, we made it to Rohtang Pass. So यहाँ पे it's definitely getting better. It's not as chilling as it was when we came here. We reached here at about 6:30 in the morning. उसमें without gloves, though we were carrying gloves, but when we reached without gloves, the blood was literally freezing in our fingers. Even while speaking right now, I'm shivering a little, but it's getting better because it's sunny. It's not as cold as it was in the morning. So if you're coming to Rohtang Pass, while we were trying to beat the traffic to come in early, but सुबह मतलब 10 बजे के बाद, आई थिंक 10-11 बजे के बाद, आफ्टर इट इज सनी, it makes sense to sort of move around. अब आप यहाँ से देखिए गाड़ियों का जैम कितना लंबा है. यहाँ इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि आप कैब लेकर आइए इंस्टेड ऑफ योर ओन कार, ताकि यू डोंट हैव टू ड्राइव सो मच. एक तो टेरेन ऐसा है, दूसरी इट्स वेरी वेरी टायरिंग आफ्टर यू प्ले इन द स्नो एंड देन व्हेन यू हैव टू ड्राइव बैक होम is when it becomes slightly tiring. The best time to come to Rohtang Pass in the year is June onwards till let's say August mid, क्योंकि उसके बाद the snow starts to melt. So जितने बड़े patches आपको snow के दिख रहे हैं, you may not find it then. I know online it says May to October, but this is the best time to come here. ये अटल टनल रोहतांग से वापस मनाली जाते हुए पड़ती है. ये कुछ 9 किलोमीटर की है. ये स्ट्रेट वे आपको कुछ, आई थिंक इट हेल्प्स यू कवर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिकॉज ऑफ दिस टनल. Back to the mall road again for dinner. Yatharth wanted to have fire pan. इधर आ जाओ बुआ पास. अच्छा नहीं मिला. सुनाई नहीं दे रहा दोनों बच्चे. रुको भैया. It was definitely a long day. Kids were super tired. They were literally dozing off, as you can see in the video. So we decided to go back to the hotel. रास्ते में एक रिवर का छोटा सा पैच दिखा जिसमें फ्लो कम था, तो बच्चों को एंजॉय कराने के लिए हमने सोचा यहाँ रुकते हैं.
इधर देखो इधर। रूहान, बेटा थोड़ा सा झुको। रूहान, मेरे को आउची नहीं करना। चलो 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 चलो, आ जाओ। फिर हम निकले वापस दिल्ली की तरफ। रास्ते में हमें मिला एक गुरुद्वारा और सबने सोचा कि एक बारी दर्शन करके आगे बढ़ते हैं, और हमें लंगर खाने का भी मौका मिला।